Hello, my dear learners. Today we will discuss about correlative connectors. इंग्लिश में कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। ऐसे कनेक्टर्स काफ़ी अधिक होते हैं। हम मेन कनेक्टर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कनेक्टर है बोथ एंड। अगर हम बोथ यूज करेंगे तो उसके बाद हमें एंड लगाना होगा। जैसे ही लाइक्स बोथ चीज केक एंड चोको केक। Both Ram and Shyam are my friends. So here we have used both, after that we have used and. So such type of usage is called correlative connectors. कहने का अर्थ है कि both को यूज करेंगे तो उसके बाद हमें and का यूज भी करना होगा। Second most important correlative connector is either or. इसको हम either or भी उच्चारण कर सकते हैं। Either you or I have to do this work. इधर हमने यूज किया, उसके बाद हमने और का प्रयोग किया। तो इस तरह से इधर के साथ और लगाना होता है। थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट correlative connector is neither nor, or we can say it neither nor. Neither Ram nor Shyam is present today in the class. Neither को हमने यूज किया, उसके आगे हमने और को यूज किया, neither के साथ और को लगाया और इस तरह से ये correlative connector यूज होता है। Likewise, not only but also. He is not only our teacher, but also a best guide for us. We have used not only, after that we have used but also. The next correlative connector is hardly then. Hardly he had come to his house. Then he got a call from his office. He again went to his office. बड़ी मुश्किल से वो घर आया था, ऑफिस से कॉल आया, तुरंत वो वापस गए। Similarly, scarcely when. In this particular sentence, we can also use scarcely. Scarcely he had reached his house when he got a call from the office to return. So, hardly के बाद then यूज होता है THEN. Scarcely के बाद when यूज होता है WHEN.
N. There are certain other correlative connectors also. For example, as far as concerned, as far as I am concerned, he is an honest man. As so, as you sow, SOW, जैसा बोओगे, as you sow, so shall you reap, वैसा ही काटोगे. तो as so, such that, he is such a personality that nobody can suspect him. So that, he is so laborious that he can conquer anything. So, these are few of the correlative connectors which I have explained today. I hope you might have learned something from this learning session. If you like, please subscribe my learning session. I will be thankful to you. Goodbye.